Hello students, I am Raju. Welcome to my channel Maths Free में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। In a right angle triangle, one angle is right angle and other two angles are equate, which are complementary to each other. That means one angle is 90 degree and sum of other two angles is 90 degree. So other two angles which are called equates of right angle are complementary to each other. आज हम इसी एंगल के बारे में some particular angles such as 30, 45, 60, 0 and 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू क्या होता है उसको हम प्रूफ सहित फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम सर्वप्रथम टेक ए ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स all three sides are equal in length. So in triangle ABC, AB is equal to BC is equal to AC. ये मैंने ABC ट्रायंगल ले लिया। Draw AD, altitude from A, vertex A, AD perpendicular to BC. We know that, हम जानते हैं any altitude of in equilateral triangle bisect the opposite side. We can prove this. Here triangle ADB and ADC, it is right angle triangle. So AD's angle ADC is equal to ADB, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल राइट एंगल है। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। सो इन ADC, AC is hypotenuse and AB is hypotenuse in triangle ADB, which are equal according to the figure, because ABC is a equilateral triangle. So AB is equal to AC and AD is the common side. AD is the common side. So congruence condition RHS, right angle, hypotenuse and side. If in two triangles, right angle, hypotenuse and one side common equal है, तो RHS congruence condition से दोनों ट्रायंगल congruence कहलाएगा। जब कॉन्ग्रुएंस कराएगा तो बाय CPCT वी कैन राइट एंगल BAD इज इक्वल टू CAD। हेयर एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all three angles are also equal in measure, so each angle is equal to 60 degree. Here angle C is equal to full angle A is equal to angle B. All are 60 degree. Here ABD and ACD are congruent. Therefore, angle BAD is equal to angle CAD. So angle 60 degree bisect. So angle CAD is equal to 30 degree. अब हम यहां देखते हैं इन ट्रायंगल ADC, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेट इन ट्रायंगल ABC all three sides are equal. Let each side equal to A centimeter. A ये पूरा A, तो इट इज 30 डिग्री
both triangles are congruent, therefore BD is equal to CD. BD is equal to CD by CPCT. Corresponding part of congruous triangle are always equal. So if BC is equal to A, therefore CD is equal to half A upon 2. हम इसे एक नए ट्रायंगल में क्लियर कर देते हैं. मान लिया ये ट्रायंगल को अलग कर लिया ADC, ये हो गया A/2, ये हो गया A सेंटीमीटर. अब हम देखेंगे ये है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री. इसी ट्रायंगल को अलग करके मैं देखा. ADC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट T. अब हम यहाँ देखेंगे अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल AC इज hypotenuse. Here hypotenuse is A centimeter and 60 degree का adjacent side A/2 is base. अब by Pythagoras theorem we know that in a right angle triangle if two sides are given then third sides are also find out. So by Pythagoras theorem AD is equal to AC square minus AD square. AD square is equal to AC square minus CD square. अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं. AC is equal to A square minus CD is equal to A upon 2 का होल स्क्वायर. A square minus A square upon 4 that is equal to 4A square minus A square that is equal to 3A square upon 4. So AD is equal to root under 3A square upon 4. यहाँ स्क्वायर हटा, RHS में रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा. Therefore it is equal to root 3A upon 2. तो AD is equal to root 3 upon 2A. यहाँ लिख देते हैं root 3 upon 2A. क्लियर. अब यहाँ हमें all three sides are shown in this figure. AC is equal to hypotenuse is A, base CD is equal to A upon 2 and perpendicular line AD is equal to root 3 upon 2A. Root 3 upon 2A. अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. टेक equitangle 60 degree. So sin 60 degree is equal to, हम जानते हैं P upon H. P upon H. So here for 60 degree this angle opposite side of this angle is called perpendicular. So P is equal to root 3 upon 2A upon H A, where A cancel, root 3 upon 2. So sin 60 degree is equal to root 3 upon 2. Same as cos 60 degree is equal to B upon H. For this equitangle, CD is the base, A upon 2 upon H A, that is equal to A upon 2 into 1 upon A. A cancel, that is equal to 1 upon 2. So cos 60 degree is equal to 1 upon 2. Further
tan 60 degree is equal to P upon B. We know that in previous classes. Tan theta is equal to P upon B. At theta is equal to 60 degree. So P upon B for 60 degree, P is equal to root 3 upon 2A upon B, A upon 2. A upon 2. Here 2 cancel, A cancel. So it is equal to root 3. Here sin 60 degree is equal to, we find out root 3 upon 2, cos 60 degree is equal to 1 upon 2, and tan 60 degree is equal to root 3. We also know that sin 60 degree and cosec 60 degree is reciprocal to each other. So sin 60 degree is equal to 1 upon cosec 60 degree is equal to root 3 upon 2A. So cosec 60 degree is equal to 2 upon root 3, because sine and cosec are reciprocal to each other. So cosec 60 degree is equal to 2 upon root 3. Same as cos 60 degree and sec 60 degree, both are reciprocal to each other. We can prove, we may prove in previous classes. So cos 60 degree is equal to 1 upon sec 60 degree is equal to 1 upon 2. So sec 60 degree is equal to 2 upon 1, that is equal to 2. Further, tan 60 degree. So tan 60 degree and cot 60 degree is reciprocal to each other. So 1 upon cot 60 degree is equal to root 3. So cot 60 degree is equal to 1 upon root 3, because tan and cot are reciprocal to each other. इस तरह हमने साइन 60 डिग्री एक्विट एंगल के लिए साइन से लेकर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है वो मैंने निकाला। इसी तरह से हम 30 डिग्री का भी मान निकालेंगे। देखिए आगे here 30 degree. So for this angle, perpendicular is CD and base adjacent side AD. We know that opposite side of given acute angle in right angle is called perpendicular. Hypotenuse, opposite side of right angle. So CD is perpendicular line and AD is adjacent side of for angle 30 degree. Now हम देखते हैं इसको साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P अपॉन H दैट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री P अपॉन H A अपॉन 2 अपॉन A. So it is equal to A upon 2 into 1 upon A cancel, it is equal to 1 upon 2. Now cos 30 degree is equal to B upon H, that is equal to B base root 3 upon 2, root 3 upon 2A upon A cancel, that is equal to root 3 upon
क्लियर? tan 30 degree, tan 30 degree P upon P, that is equal to P A upon 2 and B root 3 upon 2. 2 cancel, A cancel, that is equal to 1 upon root 3. Same as sine and cosec are reciprocal to each other, so cosec 30 degree is equal to 1 upon 2 का reciprocal 2 upon 1, that is equal to 2. Sec 30 degree, that is equal to, it is reciprocal of cos 30 degree. Cos 30 degree and sec 30 degree are reciprocal to each other, so sec 30 degree is equal to 2 upon root 3. 2 upon root 3, because root 3 upon 2 का reciprocal 2 upon root 3. And cot 30 degree, cot 30 degree tan 30 degree का reciprocal, tan and cot are reciprocal to each other, it is, we know that. So 1 upon root 3 का reciprocal root 3 upon 1, that is equal to root 3. इस तरह हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के माध्यम से 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला. साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 2, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, टाइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 बटा रूट 3, कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, कॉट 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3. यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इस पर डिस्कस करूँगा. आज के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करूँगा. थैंक यू.